दीपावली के पहले की ये बैठक थी और उसमें बहुत ऐतिहासिक निर्णय दोनों हुए हैं। भारत की एक कमी रही कि उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का केवल 16% हिस्सा है, यानी वो ज़्यादा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होती है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और कितना? लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से यह निर्णय महत्व का होगा। एक मोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी, लेकिन आज का निर्णय 10 क्षेत्रों का इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा, और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो ये बहुत है। इसके परिणाम भी आने लगे। मोबाइल की अनेक कंपनियां बाहर से भी आए। द एफडीआई हैज कम, फॉरेन कंपनीज हैव कम एंड आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड देश के भी लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जेन ही कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े, भारत उत्पादन का हब बने, यहां से निर्यात बढ़े, क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा, और सभी प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होती है, आयात कम होती है, और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये समाज के सभी वर्गों के और सभी क्षेत्रों के फायदे का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है। One continuation of a scheme which exists, but also revamping it to an extent that the financial support which has been extended all these years from 2006 of viability gap funding, or providing a viability gap fund for economic infrastructure, will now be extended even for social infrastructure. From 2006, that this scheme which exists of the viability gap funding, where 20% of the total project cost was given as the viability gap fund by the central government, 20% of the total project cost which was given had continued from 2006. We shall continue that. Till now, about 34,000 crores of rupees have been the total value of the projects which were brought under the scheme, of which the viability gap fund which was provided by the center is about 5,500 crores. We shall continue that scheme for the economic infrastructure. But what is now being offered is under 2 different schemes, viability gap funding for social infrastructure. What are they? Social sector activities which relate to wastewater treatment,
water supply, solid waste management, and health and education sectors. So in these sectors, if there are projects through which private participation can be sought, central government would extend 30%, and the state governments would have 20-20 for the social sector, and then the project pilot will get 30-30, right? Social sector 30-30. Sorry, yes. So the economic thing which continues will continue with the 20%, and the state also puts in 20%, then the private party comes up with a 60%. Whereas in the social sector, where we are now announcing that we will make available the viability gap funding, 30% will be given by the center of the total project cost. Another 30 will be either the department which deals with it or the state government which wants it. And the rest, 40%, will come through private participation. Now, if that is one of the way in which water management, wastewater treatment, hospitals, schools can be done, we are also giving a sub-scheme, which is a second scheme, which will approve demonstration and pilot projects under the social sector. In this, we are willing to provide, together with the state government or the department considered, up to 80% of capital expenditure and up to 50% of operation and maintenance costs. So this one would be for any pilot measures which anybody wants to take up or demonstration projects that will be treated slightly more favorably, but even in this case, it will be more private participation. The central government will also, under this scheme, the second scheme which is being announced for the social sector today, the central government will also bear 40% of the total project costs, and that's another 40 will come from the state. More important is about 25% of the operational cost of the first 5 years will also be borne by the state government. So with this, we expect to be able to quickly ramp up social infrastructure in this country, provide that facility for, let's say, NGO groups or groups which are interested in social infrastructure. Government will extend what till now has been given only for the economic infrastructure. The core sector infrastructure will now be available for them also and for the social sector also.